A very good afternoon to everyone. जो लोग इस वक्त ये लाइव देख रहे हैं, आप सबको बता दूं कि कनेक्ट टू किडनी केयर प्रोग्राम में मैं हूं आरजे योगी एंड आई एम ग्लैड टू वेलकम डॉक्टर भानु मिश्रा हु इज नेफ्रोलॉजिस्ट एंड ट्रांसप्लांट फिजिशियन इन बीएलके मैक्स हॉस्पिटल दिल्ली। और आज ही विल बी शेयरिंग हिज व्यूज ऑन डायबिटिक किडनी डिजीज। वेलकम टू द शो डॉक्टर भानु। Thank you, doctor. डॉक्टर भानु, बिफोर वी मूव टू द क्वेश्चन, यार मैं चाहूंगा थोड़ा सा आप अपने बारे में बताएं, किस तरह की आपकी जर्नी रही, कितना एक्सपीरियंस रहा आपका, अब तक का सफर कैसा रहा है आपका? Okay. So I started in this medical field in 2007 when I started my MBBS, and from 2007 to today, 2023. I have medical experience of let's say 15 years. I have become a nephrologist and transplant physician in the last 2 years. So with a reputed hospital, BLK Max. So the exposure of nephrology and other fields are, especially when you live in a state like Delhi, is immense because of the number of patients we have. And it's been a journey of a lot of ups and downs, but overall, I would say a good journey. वंडरफुल वंडरफुल। अच्छा, जैसे आप किडनी स्पेशलिस्ट हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, अभी आप जो है ट्रांसप्लांट फिजिशियन भी हैं, तो एज अ स्पेशलिस्ट फ्रीक्वेंटली बड़े सारे चैलेंजेस आते होंगे क्लिनिकल प्रैक्टिस के दौरान आपके सामने। कौन कौन से चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ते हैं? इफ यू कैन लेट अस नो लिटिल बिट अबाउट इट। Absolutely. दो सबसे बड़े challenges हैं which I want to highlight is one is the awareness of the problem. Awareness बहुत कम है Indian subcontinent में. In spite of events like this that one we are hosting, in spite of a lot of government and non-NGO organizations are trying to make them aware. Even we take a lot of classes and we speak to our patients. But in spite of all that we do, awareness of kidney diseases are very less unless you start suffering from it. The moment you start suffering from it, then they are aware. Otherwise, they have absolutely no idea what are the symptoms. That is one. Second is the financial. Even though people are aware, their financial issue is an extremely big problem because when you have kidney diseases, the treatment sometimes becomes, especially in good hospitals, becomes unaffordable to Indian economy. So my advice to people would be to have awareness about it, try to read about kidney diseases, especially if you're from a risk factor group like diabetes, we are going to speak about it. And second is to keep yourself ready from economy point of view by having savings and medical. राइट राइट राइट। तो मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा एक बार जितने भी हमारे जो ऑडियंस हैं उनको आप बता दें कि आज के हमारे सेशन का पूरा जो सार है, कॉन्वर्सेशन हम किस बारे में करने वाले हैं, वो क्या है। जैसा हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि ये किडनी की डिसीजेस के बारे में लोगों को पता नहीं होता है और जो रिस्क फैक्टर ग्रुप होते हैं किनको किडनी की डिसीजेस हो सकती हैं उसे हम रिस्क फैक्टर ग्रुप कहते हैं। उनमें जो सबसे बड़ा चंक है वो डायबिटीज पेशेंट्स का है और डायबिटीज में इंडिया इज डूइंग वेरी वेरी वेल। वी हैव लॉट ऑफ डायबिटिक पेशेंट्स and we have become a capital of diabetes in the world. And so this is what we are going to talk about. We are going to talk a little bit about diabetes and how it affects kidney and what we can do about it. वंडरफुल वंडरफुल सर। जैसा आपने कहा कि डायबिटीज बहुत ज्यादा लोगों को होती है और इंडिया में तो इस खासकर बहुत ज्यादा लोग हैं, तो मैं जानना चाहूंगा कि डायबिटीज जो है वो किडनीज को कैसे अफेक्ट करती है। डायबिटीज किडनी को मल्टीपल लेवल्स पे अफेक्ट करती है। हम यूजुअली ज्यादा टेक्निकल में ना जाते हुए किडनीज को हम जब पढ़ते हैं तो मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इट अफेक्ट्स ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द किडनी एंड यूजुअली इन द फर्स्ट 5 to 10 years कोई सिम्टम हमें ऐसा किडनी डिसीजेस के नहीं मिलते हैं। एंड वंस वी क्रॉस अ डेकेड मार्जिन वी start getting symptoms of swelling in your legs and facial swelling. And if you do some testing, you will see protein in the urine. So that is the initial period where diabetes starts affecting. And when it starts affecting, it affects every aspect of the kidney, the functioning, the filter effect that the kidney does for the body. Everything gets affected, and we move on from CKD stage 1 to stage 5. And this is one of the fastest ways, one of the fastest cause that damages the kidney. So diabetes is extremely debilitating for kidney. राइट राइट। अच्छा, टू बी वेरी स्पेसिफिक, ये जानना चाहूंगा आपसे कि जो इंसुलिन का जो इफेक्ट है वो
किडनीज के फंक्शन पे क्या होता है? इंसुलिन का किडनी के फंक्शन से डायरेक्ट रिलेशनशिप ऐसा नहीं है, इन द सेंस कि इंसुलिन ज्यादा लेने से या कम लेने से किडनी पे क्या फर्क है। बट इंसुलिन की राइट अमाउंट लेने से शुगर कंट्रोल बहुत अच्छा होता है, और शुगर कंट्रोल यदि अच्छा है तो लॉन्ग टर्म में इट हेल्प्स किडनी टू रिटेन इट्स फंक्शन एंड द डिटोरेशन इज स्लोअर। सो इट इज आल्सो कॉल्ड एज द लेगेसी इफेक्ट. So if you take insulin in the right quantity and you start at the right time, your sugars will get better controlled, and with the effect of that, your kidney disease might not come, or if it comes, it will come very late in the day. राइट अच्छा, एक चीज सर जो जनरल पब्लिक जो है वो भी शायद इसको मानती हो कि बार बार फ्रीक्वेंट यूरिनेशन जो है ये किडनी खराब होने का साइन हो सकता है। व्हाट डू यू से अबाउट इट, कि क्या वाकई में ऐसा है? Yes, absolutely हो सकता है, but more common reasons होते हैं यूरिन में इन्फेक्शन. तो सबसे पहले हमें यूरिन में इन्फेक्शन को रूल आउट करना चाहिए. यदि आपको बार बार यूरिन हो रही है, तो यदि आपको डायबिटीज भी है, तो और ज्यादा चांस हो जाता है कि आपका यूरिन इन्फेक्शन होने का चांस ज्यादा है. यूरिन इन्फेक्शन के कुछ और सिम्टम्स में पेशाब में जलन होना या बुखार होना हो सकता है. और यदि आपको डायबिटीज है और वो कंट्रोल में नहीं है, यदि आपकी शुगर अनकंट्रोल्ड है, 300-400 के ऊपर रेंज में जा रही है, तो भी आपका यूरिनेशन फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी. तो इन्फेक्शन और शुगर अनकंट्रोल होना ज्यादा कॉमन रीजन है बार बार यूरिन जाने के बजाय किडनी के. ये दोनों यदि आपके नॉर्मल हैं, उसके बाद भी यदि आप फ्रीक्वेंसी आपकी बढ़ी हुई है, तो आपको डेफिनेटली किडनी डिसीज की तरफ देखना चाहिए. उसके लिए आपको एक ब्लड का टेस्ट, यूरिन का टेस्ट, रिकॉर्ड परफॉर्म कराना नेसेसरी होगा टू फाइंड आउट वेदर इट्स फंक्शनिंग फाइन. जी जी। अच्छा, आज हम डायबिटिक किडनी डिजीज की बात कर रहे हैं, तो जो एंटी डायबिटिक ड्रग्स हैं, क्या ये किडनी के लिए सेफ होती हैं? Yes, anti-diabetic drugs different types के होते हैं, and at different level of kidney diseases हम different type के drugs use करते हैं. Not every drug can be used at every level of kidney problem. So initially there's a different class, and after a particular stage of kidney disease, there's a different class. So you on a platform like this, very difficult to get into details of what types of drugs and what should be used. You should get in consult with your nephrologist to find out what's your kidney level damage and whether they are affected, and the level of damage will decide what kind of drugs you can use. Direct problem नहीं होती है उसमें, तो you have to choose because you have to customize that kind of drug based on your level of kidney disease, and nephrologist has to be consulted directly. Insulin, on the contrary, can be used on all stages. राइट राइट। जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, मैं उन सबको बता दूं कि आज हमारे साथ है डॉक्टर भानु मिश्रा, हु इज नेफ्रोलॉजिस्ट एंड ट्रांसप्लांट फिजिशियन इन बीएलके मैक्स हॉस्पिटल दिल्ली, और आज हम बात कर रहे हैं डायबिटिक किडनी डिजीज के बारे में। सर, वो एक सवाल कि मेडिकेशन जो सबसे जरूरी चीज है अगर किसी को हो जाए, तो अगर किसी इंसान को डायबिटीज किडनी डिजीज हो गई है तो किस किस तरह की दवाइयां उसे अवॉइड करनी चाहिए? पहले मैं ये जानना चाहूंगा आपसे। जो commonly avoid करना चाहिए वो होता है पेन किलर्स. Now painkillers can do a lot of damage because diabetic kidney disease is a very complicated problem जिसमें हमारी muscles, bones and a lot of other things get weakened. And when you get bone weakness, especially in elderly females, pain बहुत होता है. And इंडिया में बहुत over the counter available होती है पेन किलर, so we tend to take that. ब्लड प्रेशर भी डायबिटीज के साथ हाथों हाथ आता है. तो यदि वो भी होता है तो कई बार अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर की वजह से हेडेक्स होती हैं. तो हेडेक्स एंड बॉडी एक्स की वजह से पेन किलर्स बहुत कॉमनली यूज होते हैं, बहुत इजीली मिल जाते हैं ओवर द काउंटर, तो उन्हें अवॉइड करना चाहिए. देयर आर सेफर पेन किलर्स, you should if at all you need it. And यदि आपको बार बार पेन हो रहा है, तो you should try to find out what's the basic cause of that pain and try to solve it. पेन किलर्स अवॉइड करने चाहिए. दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है एंटीबायोटिक यूजेज. एंटीबायोटिक यूजेज भी ओवर द काउंटर बहुत इजीली अवेलेबल है इंडिया में, और हर दूसरी चीज के लिए एंटीबायोटिक बहुत आसानी से प्रिस्क्राइब हो जाती है, और लोग फिजिशियन या किसी भी डॉक्टर को कंसल्ट करने की बजाय डायरेक्टली फार्मेसी से बाय कर लेते हैं. एंड दैट कैन कॉज अ लॉट ऑफ किडनी प्रॉब्लम्स, स्पेशली किडनी में एक बीमारी होती है जिसे हम इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस कहते हैं. दैट कैन हैपन. सो दीज आर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड ड्रग्स व्हिच शुड बी अवॉइडेड. देयर आर मेनी ड्रग्स व्हिच कैन अफेक्ट किडनीज, but I think these are the two most commonly used राइट drugs which जी। जैसा आपने, अच्छा, एंटीबायोटिक्स की आपने बात की, सर एक चीज, ये मेरा पर्सनल क्वेश्चन है, मैंने कुछ लोगों को देखा है कुछ एंटी एलर्जिक ड्रग्स जो हैं वो भी कंज्यूम कर लेते हैं, क्या वो भी कहीं ना कहीं हानिकारक है आपकी किडनी की हेल्थ के लिए? anti-allergic drugs. Sorry, I'm not hearing. Sorry. जैसा कि जुकाम हो गया मुझे, खांसी हो Yes, गई, गला खराब है. anti-allergics. Understood. Anti-allergics can be taken,
But as a principle, I would say before you consume an allopathic medication, please try and consult a physician, no matter how the level of physician is. Even though a plain MBBS or MD medicine or super specialist, whichever one is your family physician, try to consult a doctor before you take a allopathic medication, because no, you never know what kind of drug can cause problems. Just a small example of that is we use cough syrups, and recently there was a drama about a lot of cough syrups causing problems. And if you're a heart patient, if you're something, cough syrup sometimes contain the chemical which can cause increase in heart rate. So as small a cough syrup, which is available at every pharmacy, every household, can cause problems. So it is better to consult a doctor before you do it. वंडरफुल वंडरफुल सो बेसिकली ओवर द काउंटर मेडिकेशन से आप बचें और डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही लें जो भी आपको लेना है. Absolutely. अच्छा, कोई एक टेस्ट आप सजेस्ट करना चाहें पीरियोडिकली ताकि हम करवाएं और किडनी की हेल्थ को चेक कर सकें, कौन से टेस्ट होंगे आपके हिसाब से? किडनी की हेल्थ देखने के लिए हमें 3 टेस्टों की डिफरेंट तरीके से जरूरत होती है. पहला होता है ब्लड का टेस्ट, जिसे हम कहते हैं किडनी फंक्शन टेस्ट. उसमें देखा जाता है क्रिएटिनिन लेवल. जो दूसरे नंबर पे टेस्ट होता है वो होता है यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी. यूरिन का टेस्ट होता है जिसे हम कराना चाहिए हमें. उसका एक तरीका होता है प्रॉपरली करने का. उसको तरीके से करने यदि हम यूज करते हैं, एक अच्छी लैब में टेस्ट कराते हैं, तो वो बहुत ही सेंसिटिव होता है इनिशियल किडनी डिजीज को पकड़ने के लिए. और तीसरा होता है अल्ट्रासाउंड. इफ यू सी किडनीज फ्रॉम दीस 3 पॉइंट ऑफ व्यू, वन ब्लड, वन यूरिन, वन अल्ट्रासाउंड, 99.9% हो जाता है. जी, लास्ट लाइन सर आप रिपीट करेंगे बिकॉज आपकी आवाज चली गई. 99% डिसीजेस यदि आप क्रिएटिनिन, यूरिन और अल्ट्रासाउंड यदि यूज करते हैं तो कवर अप हो जाती है. तो यदि आप कंसर्न हैं, यदि आप रिस्क फैक्टर ग्रुप में आते हैं, डायबिटीज, ओबेसिटी एंड ब्लड प्रेशर, आपको ये 3 टेस्ट जरूर कराना चाहिए. वंडरफुल वंडरफुल. और अब आखिरी में मैं चाहूंगा सर आपको कि टू सम अप द एंटायर सेशन, कुछ टेक अवेज जो हमारे ऑडियंस है उनको याद रखना चाहिए इस पूरी कॉन्वर्सेशन से. The first and most important is the most important takeaway is you have to find out whether you come from a high risk group or not. The high risk groups are obesity, diabetes, and blood pressure. Most commonly, there are many others. Second is to be aware of the kidney disease that can happen to diabetes patients, and we just spoke about what you need to do to find out whether you have a kidney problem or not. Third is before you take any medication, whether you have diabetes, you have kidney problem or not, try to consult a physician and prepare yourself financially by using medical insurances, and so that when you, I hope you don't need it, but when it's needed, you have the right amount of economic backup to get you the right treatment. वंडरफुल. थैंक यू सो मच डॉक्टर भानु. इट वाज लवली टॉकिंग टू यू एंड आई एम श्योर जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, आपके जो एडवाइस रहे, आपके व्यूज हैं, उनको जानने के बाद में दे विल स्टार्ट टू कीप देयर किडनीज हेल्दी. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस. Thank you for calling. Thank you. And thanks for watching Sun Pharma Presents Connect to Kidney Care, and stay tuned for more such enriching and insightful sessions. Have a great day and keep listening to 92.7 Big FM. Thank you.